Anybody can anybody can speak anytime. Today is your day. It is not my day. That's why we have Zoom. I can speak in Facebook. Why Zoom? Because you take part, especially speaking, audio and video. I have given you some topics today, and these topics are on globalization. Mostly, these are on globalization. IMF and World Bank, these are also the products of globalization. IMF and World Bank, they come from Bretton Woods institutions, and in the Bretton Woods institutions, they replaced uh, dollar. They replaced gold with dollar. Previously, the standard was gold. How much gold you have, that was the measurement of your wealth. But gold was so heavy, and it was not always possible that you can take gold, or you can save gold, or you can put gold in your account. That's why they converted gold into dollars. That's why United States of America has the biggest advantage, that they publish dollars, and people consider dollar to be a stable currency, and it is like gold. So after that, United Nations and United States, because United Nations main building is in New York, and New York is in United States. United States is the biggest sponsor of United Nations. All the salaries and all the expenditures of United Nations mostly come from United States. That's why United States has a big influence on United Nations. Today, you see Palestine and Hamas. Nobody can do anything because USA is uh, with Israel. Forget about Pakistan or Muslims or Egypt and these countries. Even China and Russia cannot do anything in the presence of USA. So this financial system was the product of new liberalism, that there should be international trade, there should be free trade, and for this purpose they created WTO, World Trade Organization. Now, one of the challenge to WTO is agriculture sector. Agriculture, I have included this in today's notes. You can read agriculture, the markets of the challenges of agriculture, and the economics of agriculture at international level. Agriculture is the sector of economy which depends on natural forces, rain, and there are diseases, animals, plants. They face different challenges as compared to industries. Industries are stable, and you have machinery, you have technology, and it doesn't depend on any rainfall or water or insects or pesticides or diseases, while agriculture is a very vulnerable and a very weak sector of economy. That's why every country protect its own agriculturists or farmers, and we call it subsidy. Subsidy. For example, in Pakistan, wheat or cotton, the price that we have of wheat and cotton, it is not the market price. Market price is very low, but government give subsidy to farmers, and they increase the price for farmers, because farmer the whole year 6 months goes through a lot of difficulties and then get some money. As compared to that, you just sell one iPhone and you can get money of the 5 acre land. So you have 5 acre land and you have one iPhone. So one iPhone is more expensive than the whole wheat crop that you get from that big piece of land.
So that's why agriculture has the problem of protectionism. Protectionism. If we do not protect our own farmers, then everybody will buy China, everybody will buy Australia wheat, and nobody will buy Pakistani wheat because Pakistani wheat quality is not good as compared to China wheat or Australia wheat. So we have to boost our farmer and we have to stop the import of Australian wheat, Canadian pulses. Why? To protect our own farmers. But protectionism is against WTO, World Trade Organizations. So that's why we have the globalization of markets, that markets should be available everywhere in the world. If I can make something in Pakistan, I can take it to United States, and United States cannot stop me that why you are bringing your product to my country. This is globalization. And how it is possible? It is possible because we have now communication, we have aeroplanes, we have railways, we have shipping, we have boats, and we have technology, we have internet. We can discuss with each other how much is the price. So the world is now very close to each other, like a global village. That's why globalization is possible. But there is also protectionism. There are also clashes of civilizations. Their own people. Otherwise, the whole country will be run by other powers, and weak countries, poor countries, will be unable to compete with them. अब इसका मिसाल जो है वो चाइना है. चाइना भी आज हमारी नोट्स में मैंने आपको दी है. आज का हमारे ऐसे का टॉपिक जो है उसमें चाइना भी शामिल है. अब चाइना क्या है? पाकिस्तान जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है. अब पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी चीजें खुद नहीं बनाता. वो वजू का लोटा है या मिसवाक है या तस्बीह है या जानमाज है, वो भी चाइना से लाता है. तो तैयार चीजें वो चाइना बनाता है, हम लाते हैं और हम बेचते हैं. सो वी बिकेम अ ट्रेडर्स नेशन. वी स्टॉप्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग, और हम सिर्फ दुकानदार बन गए. चाइना से लेते हैं और यहाँ लोगों पे बेचते हैं. तो दुकानदारी जो है ये कोई कमाल नहीं है. कमाल क्या चीज है? कमाल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कि आप कारखाने लगाए, लोगों को जॉब्स दे दे, टेक्नोलॉजी ले आए, मेड इन पाकिस्तान करे, अपना रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ाए. अब ये चीज जो है वो चाइना खत्म कर रहा है. चाइना जो है उनके 1970s से पहले वहाँ कम्युनिज्म था इकोनॉमी में. अब कम्युनिज्म जो है वो सिर्फ उसमें रह गया पॉलिटिक्स में, और इकोनॉमी जो है उनकी कैपिटलिस्ट हो गई. उनकी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई, और उन्होंने न्यू लिबरलिज्म शुरू किया, और वो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के मार्केट्स में फेंक रहा है. और लोग जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए, और उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अपना मैन्युफैक्चरिंग बड़ा मुश्किल काम है. आप कारखाना लगाओगे, मजदूर लाओगे, टेक्नोलॉजी, बिजली, ये वो एनर्जी, और कभी वो चीज़ बनती है, कभी नहीं बनती, कभी खराब हो जाती है. आपको एक तैयार चीज़ मिलती है. मसलन एक बंदा, एक स्टूडेंट जो है वो ओरिजिनल किताब पढ़ता है, और दूसरा जो है वो कहते हैं यार मैं तो तैयार नोट्स पढ़ूंगा, मैं क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें पढूं. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन वो ओरिजिनल काम. और ट्रेडिंग जो है वो चाइना ने दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दी. लोग जो है उन्होंने, अब अमेरिका अपना आईफोन खुद नहीं बनाता, वो चाइना से बनाता है. तो अभी अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वार है, और सेकंड कोल्ड वार शुरू हो गया है. तो इसलिए अमेरिका जो है वो चाइना से चीजें उठा के इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह, वियतनाम में ला रहा है. क्यों? खुद क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वहां जो है लेबर बहुत महंगी है. अमेरिका में जो लेबर है, जो मजदूर है या ये जो टेक्नीशियन है, वो एक घंटे के 30, 40, 20 डॉलर मांगता है. और पाकिस्तान में लोग जो है वो 100 डॉलर जो है वो 30,000 रुपए है. तो 100 डॉलर में वो पूरा महीना काम करते हैं.
तो $100 एक महीने के और $100 जो है एक घंटे के। तो अमेरिका का इसमें फायदा है कि उसकी चीजें जो है वो बाहर दुनिया में बने। लेकिन पेटेंट जो है, पेटेंट, उसकी जो मलकियत है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो अमेरिका के पास रहते हैं। आईफोन बनता चाइना में है लेकिन है अमेरिका का। सो अमेरिका ये चाहता है, लेकिन वो अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि उसके आईफोन की वजह से चाइना इतना बड़ा सुपर पावर बन जाए और फिर उसको आगे दिखाना शुरू करे। क्योंकि चाइना में क्रिएटिविटी पहले नहीं थी, ओरिजिनलिटी नहीं थी, वो दुनिया की चीजें बनाता था, खुद उनका कोई ब्रांड नहीं था। ब्रांडिंग जो है वो जापान, जर्मनी और अमेरिका, इस तरह की कंट्रीज का ब्रांड होते थे। चाइना का ब्रांड अभी हवाई और इस तरह के दो आ गए हैं, ओप्पो शोपो वगैरह। लेकिन ओवरऑल जो है चाइना, वो उसमें ओरिजिनलिटी कम है। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का है। आईएमएफ जो है, क्या ये डिजास्टर है या ये नुस्खा है, रेसिपी है? तो अगर आप आईएमएफ का रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम देखें तो आईएमएफ कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं देता। आईएमएफ के तमाम मशवरे ठीक होते हैं। लेकिन आईएमएफ का मशवरा उस डॉक्टर की तरह है कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको ब्लड प्रेशर है और आपको शुगर है। डॉक्टर आपको कहता है कि यार ये चीजें मत खाओ, ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो चीज इतनी मीठी, इतनी प्यारी होती है कि उसको बंदा छोड़ नहीं सकता। तो आईएमएफ आपको ये कहता है कि भाई सब्सिडी मत दो, प्रोटेक्शनिज्म खत्म करो। अगर आपके मेट्रो का जो टिकट है, मेट्रो के टिकट का अगर खर्चा जो है ₹100 है, तो उसको ₹25 में मत बेचो, जो उसका प्राइस है उसी पे चलो। इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर हम आईएमएफ की बेल आउट जो है, उसके पैसे सही इस्तेमाल करें और उसके एडवाइसेस पे अमल करें, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है। बाकी मैंने आपको नोट्स भी दिए है और आउटलाइन भी दिए है तमाम टॉपिक्स का। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है या जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स है और ये सीएसएस के पुराने पेपर से मैंने लिए हैं। और तमाम टॉपिक्स के लिए मैंने आपको आउटलाइंस और नोट्स आपको दिए है, तो उसको आप पढ़ें। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। सॉरी सर, ये आपने जो अभी डिस्कशन की आईएमएफ बेल, रेमेडी और डिजास्टर, रेसिपी और डिजास्टर, जी। तो अगर हम इसमें मतलब हम इसके अगेंस्ट जाए, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बंदा या राइटर अगेंस्ट भी जा सकता है और इसके फेवर में भी जा सकता है। तो इसमें सर मतलब सेफ रूट कौन सा है, हम किधर जाए मतलब इसमें? हाँ, अच्छा, इसमें जो है दो टॉपिक्स है आज के टॉपिक्स में। एक जो टॉपिक है वो आईएमएफ, डिजास्टर और रेसिपी, कि ये तबाही है या ये मसले का हल है। इसमें आपको एक चूज करना पड़ेगा अपने थीसिस स्टेटमेंट में। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, जो इंट्रोडक्शन का आखिरी सेंटेंस है, उसमें आपने आईएमएफ को या अच्छा डिक्लेयर करना पड़ेगा या बुरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। क्या आईएमएफ के हक में है या आप आईएमएफ के खिलाफ है? तो इसमें आपने एक करा होगा कि IMF is a disaster and Pakistan must avoid IMF bailout and work on its own economy so that our economy, so that Pakistani economy is not dependent on IMF. तो ये आपका एक तीसरी स्टेटमेंट हो। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ये है कि IMF is a recipe because IMF gives restructuring program along with the dollars on very minimum interest rate. If this money is utilized properly, IMF bailout can be a recipe. अब चाइना जो आपको लोन देता है वो 5-6% इंटरेस्ट रेट पे देता है। आईएमएफ जो आपको लोन देता है वो 1%, 2%, वो बहुत कम परसेंटेज पे देता है। आईएमएफ के लोन के लिए ये लोग पागल क्यों है? मतलब $6 बिलियन क्या चीज है यार? चाइना ने आपको $70 बिलियन सीपेक दिया है। अब $6 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन के लिए पाकिस्तान क्यों पागल होता है? ये इसलिए कि जब आईएमएफ आपको लोन देता है
तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो जबरदस्त है, तो बाकी लोग भी फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं। अगर दुबई या सऊदी आपको कुछ देते हैं तो वो तब देते हैं जब आईएमएफ आपको लोन देता है। जो आईएमएफ जिस कंट्री को इनकार करता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे, तो वो कंट्री बिल्कुल खत्म होता है, क्योंकि आईएमएफ को पता होता है कि इस कंट्री में ये ताकत है या नहीं है कि उसकी जो लोन है वो वापस करे। अगर वो लोन वापस नहीं कर, ये क्यों कहते हैं कि बिजली का बिल बढ़ाओ और गैस बढ़ाओ और टैक्सेस लगाओ, आईएमएफ ये बातें क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि यार आपके पास पैसा आएगा तो मुझे दोगे। वो पुराने जमाने में एक दुकानदार था, तो उसने लोगों से कर्जे लिए था, तो एक दिन उसका दुकान बंद थी, तो लोग बड़े हैरान हो गए कि यार दुकानदार किधर गया। तो लोग उसके घर गए, उसको मिन्नती की कि प्लीज भाईजान आ जाए, अपना दुकान खोले। तो किसी ने पूछा कि यार तुम लोगों को क्या परवाह है कि दुकान खोलते है कि नहीं खोलता। तो कह रहा है यार ये बंदा दुकान खोलेगा, उसका कारोबार चलेगा, पैसा कमाएगा, तो हमारा कर्जा वापस देगा। अगर इसकी दुकान बंद है तो हमारा कर्जा वापस कैसे देगा? तो आईएमएफ का जो अप्रोच है वो आपको कर्ज भी देता है, साथ आपको ये भी बताता है कि तुम अपने हालात ठीक करो। इसलिए कहता है कि तुम इसके काबिल हो कि उनका कर्ज कम से कम वापस तो करो, उनका कर्ज डूब न जाए। इस वजह से वो शराइत लगाता है, कंडीशनलिटीज लगाता है। तो इस टॉपिक में आपने एक लाइन एक साइड लेना है। दूसरा जो टॉपिक है वो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की प्रोज ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड है, आपकी मार्केट, दुनिया पूरी आपकी मार्केट बन जाती है, आपके प्रोडक्ट्स हर जगह पहुंच जाती है, तो ये प्रोज है। कॉन्स ये है कि फिर आपको अपने दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे, तो आपके अपने लोग जो है जो अपनी चीजें बनाते हैं, जिस तरह कि मैंने गंदम का मिसाल दिया, अगर ऑस्ट्रेलिया का गंदम पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तानी पागल है कि वो पाकिस्तानी गंदम खरीदे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का गंदम इतना बड़ा बड़ा गंदम, इतना खूबसूरत उसका दाना, उसका इतना जबरदस्त आटा होता है, तो ये पाकिस्तान के तोड़े मोड़े वाले जो है ना, कौन खरीदेगा फिर? तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो फिर आपकी अपनी इकोनॉमी जो है उसके लिए खतरनाक भी है। तो इस तरह के टॉपिक में आपको दोनों आर्गुमेंट्स देने हैं, क्योंकि टॉपिक ये है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक ये नहीं है कि प्रोज और कॉन्स। अगर प्रोज और है या प्रोज या कॉन्स, फिर आपने एक सेलेक्ट करना है। अगर एंड है तो आपने दोनों लिखने हैं। लेकिन आईएमएफ में आपने एक सेलेक्ट करना होगा कि ये अच्छा है या बुरा है। और ये अच्छा कहना या बुरा कहना जो है, इसी को तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं, कि आप अपना बयान देते हैं कि टॉपिक के बारे में आपका पोजीशन क्या है। नेक्स्ट प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया, एनी कमेंट? Sir, यस। sir, but when we see the case study of Egypt, so their policies, economic policies, were mainly made by IMF themselves. So how can we say that they are a kind of recipe for or like a development? And but Egypt failed during their IMF's rule or IMF's policies or IMF as influence when their policies were mostly run by IMF themselves. So it's their third No. problem under the Abdel Fattah al-Sisi. Yes, yes. Actually, as I said, that when IMF gives you loan and gives you conditionalities, how do you respond to that? Most of the the European countries and many other countries, they have success stories with IMF. You should just study Marshall Plan. When Hitler, Germany destroyed Europe, and the United States gave Marshall Plan to Europe, which was similar to IMF, and Japan, which was destroyed by USA by nuclear bombing. Japan also adopted IMF policies, and today we see that Japan is number 3 economy of the world, and where is Europe? So it depends. You can Google it. Success stories of IMF, where IMF was successful.
And IMF doesn't tell you that you must take money from them. You go to IMF and you request to IMF, please give us money. Because when IMF gives you money, world start trusting you. If IMF doesn't give you money, so world does not trust you. So this was the problem of Egypt. It was not the problem of IMF. And though Egypt did not succeed so much, but still IMF is a big economy. And sorry, Egypt is a big economy. It is a very stable country now, and their imports, exports, and their economy is improving. It is not a total disaster. They have a very good textile sector, and they receive a lot of tourism. Uh, Egypt is not a failed state like other states of the world. Egypt is one of the biggest economies of Africa and Arab world. But sir, when we talk about the Marshall Plan, so it was actually US own interest that they wanted to keep Europe out of the influence of the USSR. But Yes, now yes. we can say that when Pakistan needs some kind of money, so they just pursue USA first, and then IMF gives them money. So IMF is the biggest stakeholder in IMF is United States. Only the name changed. It was a Marshall Plan, and this is called IMF. But the mechanism is the same. USA definitely want that Pakistan should be in their camp, and it should not go to some other camp, China, Russia, or others. As USA wanted Europe, the same USA wants Pakistan. Now it is up to Pakistan, as I gave you yesterday an example that when I was finance officer in National Bank and I used to give money to people, and when the money I would go to ask them, give the money back, and they would say, no, we spend the money in marriages. So it depends that what you do with the IMF. Remember, IMF does not come to you. You go to IMF. IMF does not need you. You need IMF. But as our mentality is blame game, and anything which comes from the West, we consider it bad. That's why for us, IMF is a monster or IMF is something bad. IMF never gives you any wrong advice. IMF gives you its own money with a very low interest. So there is nothing bad in it. It depends on our system. As we have problems elsewhere, the same problem we have with IMF money also. We have the issues of good governance, our economy, our economic structure that is not appropriate. That's why we do not utilize IMF money and IMF schemes in a proper way. Problem lies with Pakistan. Problem does not lie with IMF. However, you can oppose this topic. If you have strong arguments for essay writing, you can oppose it. And you can denounce IMF and you can consider it as a disaster. You have the right. Why religious scholars like Sirajul Haq and Senator Mushtaq say, not says, they are plural. So you will say, not says. Actually, all the religious people, they oppose West. They oppose the West, though the West is name of science, technology, economy, uh, फिलॉसफी, रैशनैलिटी, डेवलपमेंट, जितने भी अच्छी चीजें हैं वो वेस्ट में है. मैंने जब काजी हुसैन अहमद की फैमिली देखी अमेरिका में, अब मैंने उसके बच्चे से पूछा, उसके बेटे से पूछा कि भाईजान तुमने तो मेरे घर की दीवार पे लिखा था कि अमेरिका मुर्दाबाद, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? तुमने तो गरीब लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, अमेरिका का मुखालिफत कर दिया. हालांकि अमेरिका में इतना जबरदस्त एजुकेशन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और तुमने लोगों के जहन में जो है वो अमेरिका के खिलाफ जहर भर दिया है और खुद इधर बैठे हो. तो उसके पास कोई जवाब नहीं था. मुनाफिक लोग हैं,
खुद अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके बच्चे उधर पढ़ते हैं, लेकिन आपके जहन में डालते कि जी अमेरिका मुर्दाबाद। क्यों? कि जब लोग अमेरिका को जिंदाबाद कहेंगे, अमेरिकन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे, फिलॉसफीज पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो फिर मौलवी को कौन सुनेगा? पागल है क्या कोई मौलवी को नूह अलैहिस्सलाम के किस्से और प्लान के किस्से और कब्र के और इजदहा और आग और ये बातें कौन सुनता है? फिर आप खुद उससे एलर्जिक हो जाओगे। तो वो ये उनका प्रोपेगेंडा है, ये उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है कि भाई लोगों को यूरोप से बचाओ, अमेरिका से बचाओ। उनको अगर वो चस्का लग गया तो फिर आपको कभी भी नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट। Sir, we have another topic, that globalization, its pros and cons. So in that, I have a question that when we see that globalization is some kind of like giving importance to the other economies, but when we see that they are also a case of like exploitation of cheap labor and gender disparities and environmental degradation. So how can we restrict this kind of exploitation or environmental degradation out of the globalization? Sustainable development is the answer, that development should be sustainable. There must be manufacturing, there must be industrialization, but not at the cost of nature, not at the cost of environment. And that's why SDGs, Sustainable Development Goals, it is a very important agenda, UN agenda, and UN is trying to implement this agenda on every country. Now we have the next climate conference, and climate change is now becoming a buzzword, and everybody is talking about climate change. Luckily, in United States, the government is of Democrats, and Democrats, they are in the favor to control climate change. Conservatives, Republicans, people like Trump, they do not believe in any policy for climate change. They want more manufacturing, more industrialization, and for them, climate change is not a fact. So the world is becoming conscious of climate change. So there is now responsible capitalism, responsible neoliberalism, and if you go to USA and Canada, the best environment that I have seen, that is in USA and Canada. In Canada, after each 1 mile or half mile, there must be a jungle. So in the city, in the capital city, if you go a few meters here and there, you will find jungles, and there are beautiful mountains, and there are lakes and forests. The same is in USA. It's such a beautiful country. And when you go to Europe, Switzerland, Germany, and Holland, and all these countries are so beautiful. So now they are not destroying nature. And who is destroying nature? Poor African, Asian, developing countries. They do not take care of nature. If you go to Bahria town, or you go to defense, so you will see more plantation. But if you go to some poor village, you will not see plantation. You will not see you will not see trees. So the issue is not money, not industrialization, not globalization, but this is the awareness for environment and nature. Globalization, you have both pros and cons, and I have given you in the notes, and you can Google it more, that whether globalization is a good thing or bad thing. That depends on your own approach. Personally, I will never oppose globalization, because in today's well-connected world, you cannot stop globalization. Globalization is now a reality, though some countries, they should protect their agriculture sector, but in industries and manufacturing and services, there should be open competition. And when there is open competition, everybody will be quality conscious, and then they will be producing good quality products. Sir, we can see that Haji bhai, our country. कोई और बात? Yes.
Sir, we Go ahead. see that, yes, sir, we see that agricultural products can contribute in our GDP almost 17 to 19%. But when we see that in India, it almost contributes more than 20%. So they have a green kind of revolution, or with the name of green revolution, they have revolutionized their agricultural practices. But why Pakistanis, or why Pakistan doesn't uh, take such initiative to contribute more in agriculture sector? असल में पाकिस्तानी के जहन में जो है मौलवी इतना घुस गया है कि मौलवी ने उनको ये कहा है कि ये दुनिया जो है ये मुसलमानों के लिए कैद खाना है, और जो हमारी असल ज़िंदगी है वो मौत के बाद है, हम जन्नत जाएंगे, हूर होंगे, और दूध के नहरें होंगे, शराब के नहरें होंगे। तो मौलवियों ने पाकिस्तानियों को फैंटेसीज में डाला है, उनको सबको साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बनाया है। तो इस वजह से अब इंडिया में अगर हिंदुत्व आ जाता है और वो भी यही मजहबी बातें और यही सारी आइडियोलॉजीज और राम राम कृष्णा, वो भी ये काम शुरू करेंगे, तो फिर जो है उनका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। सो देयर इज अ स्टडी ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन रिलीजन एंड डेवलपमेंट। The more a society is religious, the less it will be developed. India was a mostly secular country, and it was a liberal country, and that's why it was a huge economy. Even Modi himself is a capitalist, and he's a liberal kind of person, though he's using religion for his political purposes. In Pakistan, our priorities are different. There is no professionalism, there is no critical thinking, there is no rationalism, there is no primary education which can prepare leaders of the future. People, they are shy, they are judgmental, they have dirty minds, they are interested in non-issues, and they are not interested in real issues. That's why Pakistani society, Pakistani government, Pakistani social values or cultural patterns are different from India. That's why India is going up and Pakistan is going down. We have governance problems, transparency problems, corruption problems, education problems. Our economy is undocumented. People are not paying taxes. Infrastructure problem, population problem. India is also 1 billion plus, but it is a huge country. While Pakistan is geographically very small, but we have 250 million people. So there are so many disasters that Pakistan is facing, and that's why we have economic, political, socio-economic, and other issues. So let me see this chart. We can also see the influence of multinational fast food chains on local diets and economics like McDonald's in various countries. So they pose a serious threat to potential. Yes, McDonald or anything, any multinational, that is a challenge to our competition and a challenge to our innovation and challenge to our quality standards. अब आप मैकडोनल्ड जाते हैं तो उनका इतना खूबसूरत माहौल है, सफाई है। मैकडोनल्ड जहाँ खुलता है तो आगे पीछे की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। वहाँ क्लास के लोग जाते हैं, साफ सुथरे लोग जाते हैं, उनके बेंचेस साफ सुथरे होते हैं, उनके वॉशरूम जो है वो साफ सुथरे होते हैं, उनका खाना जो है वो साफ सुथरा होता है, उनका पेपर देखो, उनका स्टाइल देखो, उनका ब्रेड देखो, वो सारी चीजें जो है हमारे लिए चैलेंज है। क्या हमारे कबाब ठीक है ना, जिसमें वो लुआब डालते हैं, जिसमें वो नस्वार डालते हैं, जिस तरीके से जो है वो हमारे कबाब बनते हैं, जो हमारी कढ़ाइयाँ है, जो हमारी खाने हैं, वो किस गन में हम बनाते हैं। तो मैकडोनल्ड जो है उसे वो लोग डरते हैं जिनके पास क्वालिटी नहीं है, जिनके पास कंपटीशन नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड कोई अच्छी चीज है, लेकिन हमारा अपना फास्ट फूड जो है वो कितना गंदा होता है, उसमें कितना गंदा हम पानी डालते हैं, कितना गंदा उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें मिलावट होते हैं, उसमें 2 नंबर चीजें होती है। So McDonald is the name of quality, and whenever it goes, it increases the value of the property around it,
And if somebody wants to choose fast food, so McDonald's can be the best choice, and it is not so सर expensive. लेकिन If you can कंज्यूमरिज्म का compete फैक्टर भी तो आ McDonald's, जाता है ना, yes, तो कंज्यूमरिज्म का फैक्टर भी तो आ जाता है ना सर फिर इसमें. consumerism is important for economy. When there's no consumerism, so how the economy will work? Consumerism means that you are consuming the product that you are preparing. Why you will not consume it? You have a lot of products and it is just there and nobody is buying it. Is it good, or there should be consumerism so that people start consuming? It is just a propaganda of Marxist and communist and these religious people who will tell you कि जी आपका जो सुकून है वो कब्र में है, और मरने के बाद आपको मौत, कब्र के बाद आपको सुकून मिलेगा. और ये जो मार्क्सिस्ट है और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो भी इस तरह के आपको ग्रीन गार्डन जो है वो सबज बाग दिखाते हैं कि ये होगा तो वो होगा. अमेरिका क्यों सुपर पावर है, चाइना क्यों सुपर पावर है? वो कंज्यूमरिज्म की वजह से है. कंजम्पशन कोई बुरी चीज तो नहीं है. आप एक चीज बनाते हैं, अब अमेरिका में ये रूल है कि हर सुपरमार्केट में एक प्रोडक्ट के लिए 6-7 आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए. अगर आप जो है मैंगो खरीदते हैं तो 7 किस्म के मैंगो जो है वहां होंगे, तो फिर आप मैंगो खरीद सकते हैं. तो कंज्यूमरिज्म इज अ वेरी, it is a motor for your economy. If there is no consumption, there will be no production. When there is no production, there will be no jobs, there will be no manufacturing, there will be no employment. लेकिन इस So we चीज have का 3 फिर फायदा minutes. क्या है जब हमारी, Yes. सर इस चीज का क्या फायदा जब वो सारी जो टैक्सेस हैं वो सारी जो भी पैसे हैं वो सारे तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो ले जाती हैं, फिर हम वहाँ पे यहाँ पे आके फिर हम MSPs दे देते हैं इकोनॉमी पे. Multinational gives you a lot of jobs, opportunities, properties. They rent your properties. They construct buildings where your people work. So there is nothing bad in it. I have the last question. I have 2 minutes. So thank you very much, guys, for your participation. It was a wonderful discussion today. And please read the notes for today's topics. Duration of government matters are not, because one can see whenever duration of the government is longer, there is prosperity and progress. Yeah, 5 years. 5 years is a good time frame. It should not be 3 years, and it should not be 10 years or the whole life. 5 years is a good time. That's why in America, in United States of America, the time for the government is 5 years. Maybe 6 years, 7 years also in some countries, but it should not be dictatorship. One man is not the solution to all the problems. Different leaders should come. That's why in United States, we have presidents like Bush, Obama, and Trump, and Biden, and we have Eisenhower, and we have from George Washington till today, every president is a great leader. So that's why democracy should be there, but it should not be like 1 year, 3 years, and it shouldn't be 10 years or the whole life dictatorship. Balance, equilibrium is highly important. So please share your feedback in SAFE2, and I will also make a post in the open group. So please share your feedback on Zoom. And all these discussions are brainstorming so that your brain start works and you can present your ideas. Those people who are participating, they are doing excellent job, and those who are not participating, at least they should have determination that in next session I will have